Hey all, Ankit Kishore this side from Stierfleet team, and I welcome you back to my channel. So again, a summary video of this Nifty expiry. So before giving you any summary of how they went and how I adjust my position and everything, let me tell you what profit and loss I made today. So in this Zerodha account, I made almost 19k profit, and in this main Alice Blue account, I made 18k profit. So altogether, in main accounts, I made 37k profit. Okay, and in this small account. इन दिस स्मॉल अकाउंट आई मेड 19k प्रॉफिट एंड सो यहाँ पे मैं एक अपडेट दे देता हूँ क्योंकि मैंने आज टेलीग्राम पे बोल रखा है कि मैं इस पे अपडेट दूंगा. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, मैं इस चार्ट पे बताता हूँ. सी व्हेन बैंक निफ्टी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑन 1 minute चार्ट. सो व्हाट हैपेंड हियर एग्जैक्टली व्हेन दिस रेड कैंडल फॉर्म्ड, उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया था. फिर जब ये नीचे गया और यहाँ पे जब इसने ग्रीन कैंडल बनाया था तो मैंने काफी अच्छा क्वांटिटी लिया था एंड माय एसएल दैट टाइम वाज बिलो दिस थिंग. ओके, बट मैंने थोड़ा इसके नीचे एसएल रखा था और वो इसी कैंडल पे हिट हो गया एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 6-7k ऑफ लॉस. ओके, दैट टाइम क्वांटिटी वाज वेरी गुड. But what happened here in this down move? See, I was bullish in Bank Nifty, and that's I told even on the Telegram channel that I'm bullish. So what actually I did there? जब मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा था, so let me say this thing on 5-minute chart. See, so जब मार्केट यहाँ पे नीचे गया और जब ये रेड कैंडल का हाई ब्रीच हुआ, okay, so that time there are so many support. Okay, you can see it from here also, and I had some analysis also. So on that basis, when this red candle high got broken, I took entry here. Okay, in the same strike, in this strike, okay, let me yeah, this one. Okay, इस strike पे मैंने दोबारा एंटर किया और मैंने ग्रुप पे अपडेट भी दिया था कि ये जब ऊपर जा रहा था, okay, that time I was holding it and it was giving me almost 10-11k profit, and that time only I added this 200C and that time it was trading for 42 rupees. Okay, तो ये एवरेज 36 हो रहा है, बट एक्चुअली एवरेज इतना नीचे क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 90 क्वांटिटी सेल किया था, फिर मैं इसे क्वांटिटी इंक्रीज करता गया जैसे ही नीचे जा रहा था. दैट्स वाई इट इज शोइंग यू 36 as average selling price. So what happened here and why I added this first thing. So जब ये गैप ब्रीच हुआ, जब ये गैप बिल्कुल फुलफिल हुआ, तो फिर मेरे को लगा अब यहाँ से यार मार्केट इज नॉट शोइंग दैट बुलिशनेस एंड दैट वॉल्यूम इज नॉट कमिंग. सो द स्ट्रेंथ फ्रॉम द बायर साइड वाज नॉट विजिबल. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज ट्राइंग टू गो अप, बट यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम आ नहीं रहा था. मैं आपको ये चार्ट फ्यूचर की चार्ट पे दिखाता हूँ. तो यहाँ जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, एक भी ऐसा कुछ इस तरीके का वॉल्यूम का कैंडल बना ही नहीं. ओके, तो मेरे को यहाँ पे था कि ओके, आई विल मेक इट अ स्ट्रैंगल, बट आई विल वेट वेयर टू मेक इट. सो जब मार्केट यहाँ पे ये बार बार ब्रीच कर रहा था, पहली बार में नीचे गया, मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बट सेकंड टाइम जब ये ऊपर गया और ये कैंडल जो एक ब्रेकआउट कैंडल था, ये जब रेड पे कन्वर्ट हुआ तो इसके लो पे मैंने उस क्वांटिटी को ऐड किया ऑलमोस्ट 42-43 पे, और फिर मैं उसे ऐड करता गया और यहाँ पे जाकर मेरा वो ऐसे ले गया इसी कैंडल पे. सो दिस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रैंगल and along with the exit of complete position happened in just 2 candles. Here I added this C leg और फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ बुक कर लिया. Okay, and that time all together it was giving me a profit of like 12k but 11k almost. Okay, and मेरा जो SL था, सिर्फ पी लेके मैं बात कर रहा हूँ, वो ब्रेक इवन था और वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा. जब मैंने 700 पे बुक किया तो ये ब्रेक इवन था. सो इस पे मैं 11k के प्रॉफिट पे रन हो रहा था एंड दैट टाइम व्हेन आई एडेड दिस थिंग, सो इट टुक माय एसएल एट ब्रेक इवन, बट एट द सेम टाइम दिस सी गेव मी अ स्मॉल डिके ऑफ 3500 रुपीज. ओके, सो दैट मोर और लेस was the summary of this directional trade. Okay, and how I managed it. So altogether I gained 4.2k profit here, and the rest 15k came from the from doing a strangling on Nifty. Okay, so वो update मैं आपको इसके साथ ही दूंगा मेन अकाउंट्स के साथ, क्योंकि more or less it's a replica of what happened in the main accounts. Okay, so you know this main Alice Blue account is exact replica of this account because I copy trade from this Zerodha account to this Alice Blue account. Okay, so that's how it happened. So this main account is exact replica of this thing, and this one here I do manual trading. Okay, so this strangle also I manage manually only, so it more or less shows the same thing which happened here, but a bit aggressive, and that is the reason even with a small sizing, a small capital, it has actually gave a decay profit equals to the main account. Okay, so now coming back to this thing and let me summarize the day. So here what happened in the very first day, in the very first candle, market slide down and then it went up a bit. उसके बाद एक कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद ये ब्रीच जैसे हुआ तो फिर मार्केट बहुत अच्छे से स्लाइड किया डाउन साइड. ओके, बट आई वाज वेरी रेज्ड ऑफ. ओके, कंप्लीट डे अगर आप देखोगे आज मैंने टोटल ऑर्डर्स कितने पंच किए हैं. सो इन 6 ऑर्डर्स को अगर आप छोड़ दो तो आई जस्ट पंच 34 ऑर्डर्स. ओके, इन टोटल
Okay, so this is the least order I punched in the last 3-4 months. Okay, and it was a very easy ride for me because I was playing so defensive, and I didn't even bother to come closer even in the second half. Because the kind of decay that was happening, it was way too much. Okay, और मेरे को यहाँ से बिल्कुल ही वेट, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का दिखाता हूँ स्ट्रैंगल का चार्ट. सी, यहाँ से आप देखोगे तो बहुत ही अग्रेसिवली प्रीमियम डिके हो रहे थे. ओके, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी आई वाज नॉट कंफर्टेबल रिस्किंग ऑन. ओके, एंड दैट इज द रीजन कंटिन्यूअस फॉर कंप्लीट डे I was on a strangle of like 400 points. Okay, and somewhere here only I just tried to come closer, and that too I didn't come that close. अगर आप देखोगे अभी भी मैं 150 पॉइंट स्ट्रैंगल पे ही था. I could have easily tried to book another 4-5k अगर मैं और नजदीक आता जाता aggressively in the second half, but I didn't do it. Reason for that I already told you. Okay, so because I wanted a peaceful day for today. Okay, and that's how I traded the whole day. And right now from the past few expiries, if you are seeing it, I am playing very conservatively. Okay, and what is the reason behind it? See, again the same thing. I think I told you this last to last expiry also, that right now it's a environment where VIX is increasing, where volatility will increase a bit. Okay, and the behavior of premium will be there. Okay, very weird there. So better first, if we are collecting some decay in the first half, or if you are having a cushion of profit, then we can try to capitalize on it. Okay, but if the decay has gone, you played defensive that time, you were not having the quantity which you thought of, then it's better don't add quantity in the worst possible RR. Okay, and here in the first, I guess 60-70% of the day I was playing very conservatively, so it was not making sense to me to increase the quantity, so come closer, they were not making sense to me, and that is the reason I just continued playing that way. और इसलिए मैंने इस तरीके से इसे play किया, और I'm happy with the closing and with the approach I was having, and if with that approach if I'm collecting this much, so obviously no complaint, so to say. Okay, so overall I made almost 56-57k for the day, including all 3 accounts. So yeah, this is the summary of the day, and this is how I traded the day. And looking at the behavior of the price action, it is, see, considering, if you'll consider the last few expiries, it was no doubt a easy expiry. Okay, but still the behavior were there, and the one thing which was missing today was the gamma movement, was the IBS spike. It didn't happen at all. And at the same time there was not delta move also that big. Okay, where you could have capitalized something. So there was nothing you could have done. अगर आपने aggressively play किया होगा right from the beginning, you could have managed to get like 1% decay. अगर आपने defensive मेरी तरह play किया होगा, then you could have managed to get like 0.5% the way I did. Okay, so that's the summary about the day, and this is it from my end, and I hope everything that I'm telling you, you're learning something from them, and if you do, then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye.